हे भगवान, अभी आ रहा ना? आ गया। एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अभी चेक कर लेना एक बार प्लीज। हाँ ठीक है, अभी आ रहा है, साउंड आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ अभी चेक कर लेना एक बार। या आ रहा है? अभी आ रहा है? या वंडरफुल। प्रकाश जी थोड़ा मतलब अवेलेबल में रहना प्लीज। जी जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। अभी अब आने लगा सर। राइट राइट, ओके स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना? या थैंक यू, ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। वन सेकंड प्लीज। वंडरफुल। प्रकाश जी थोड़ा राइट, वन सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, shall we start? Is everything fine? All of you, is everything fine? All of you, is everything fine? बोले रे कुछ ना कुछ। Yes sir, all fine. Right, very good, let's start now. चलो, without wasting time, we'll proceed. Chalo, I have made some beautiful models for you so that you can understand things very clearly. This is a C section. I have made everything very clearly. एक बार देख लेना. Okay? Like this. Right. Okay. Very good. My dear students, let's understand this. अभी स्टार्ट कर रहा हूं सर। नो आई एम सॉरी, 3-4 मिनट का डिले हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होता है बिकॉज इट इज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इन फैक्ट मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट दैट इज shear center. So now I will try my level best to explain this concept in a very simple manner with all derivations, with all physical aspects, what is happening exactly. We will discuss so neatly, but there is only one request from your side. And my dear students, Tanuj is available, so you must be having my number. If there is any difficulty in live streaming, please call me so that we can make immediate arrangements, so don't worry about that. So now just focus on the class, but the only thing that I request from your side is you have to give time. So this is such a wonderful concept. It is not only asked in examination, but it is asked in many interviews, and this is equally important from civil engineering point of view, mechanical engineering point of view, and so therefore I request you to watch till the end. I am not forcing you to attend and watch. If you feel that you are understanding concepts thoroughly, then you watch till the end. Otherwise, you will not gain concepts, I am sure. Otherwise, you won't gain concepts, I am sure, sirs. I am 100% sure you won't gain concepts. If you are attending in the middle, you don't gain concepts. Okay, now, shall we proceed? Chalo. My dear students, let us take a rectangular section. Let us take a rectangular section. Wonderful. This is the centroidal axis. This is the centroidal axis. Let us take this as YY and let us take this as XX. So this rectangular cross section has double symmetry. What do we mean by double symmetry? For example, if you fold the left side onto right side, you get this. Similarly, if you fold the top onto the bottom, you get
this portion. So from top, if you fold it, you get the bottom portion. From left, if you fold it, you get right portion, or from right, if you fold it to the left, you get this portion. No problem at all. So this is double symmetry. Now, this is the center of gravity. Very good. These two axes are known as principal centroidal axis. Principal centroidal axis. It's a request to all of you. I will give every derivation, I will give every physical field, and it's my promise key, you are going to understand the concept perfectly. I'm telling you, no matter what, in interviews, whatever they ask, you will be in a position to understand this. But the only request is you have to give time, because it is, I never requested till now you have to attend completely till the end. But as this is a wonderful concept, I request everyone to attend till the end. Otherwise, leave now itself. If you do not want to invest time, please leave. Because I will be separating each portion. You just say, I will be separating each portion and I will be showing forces. I will be showing forces, how forces are coming and how shear is varying. It's my responsibility. But the only thing is you have to give time. Otherwise, it's not possible. Okay. Now, dear students, let us take a circular section. This also has double symmetry. Very good. So when you are folding the left half or top half, you will get the other half. So it too has double symmetry. Now what about a hollow circle? Yes, it too has exactly same. Now, dear students, let us take C section. Let us take C section. Now, there are two principal axes, principal centroidal axis. Okay. Let us assume that this is one axis, that is XX, and this is the other axis YY. Now, dear students, if you fold the top onto the half, exactly you get this. So therefore, it is symmetric about this axis. What about this axis, YY axis? If I am folding this, are you getting this portion? Absolutely no. When I fold this, I don't get this. Means this is not the axis of symmetry and this is the axis of symmetry. So therefore, it has one axis of symmetry. Now, let us take this L section. Oh my God. It neither has any axis of symmetry. If you fold this, you are not getting this. If you fold this, you are not getting this. It has no axis of symmetry. It has no axis of symmetry. Now let us see what is happening now. So this concept which I am going to discuss is a very important concept in thin, I mean when the thickness is very, very small. Thin members. For example, please understand. मैं तो एक्चुअली ना आई एम चेकिंग ऑन, देखो एक वेरी गुड. तो ललित हैज आस्क्ड वन वंडरफुल क्वेश्चन. आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स कहां दिख रहे हैं? तो आई एम सीइंग योर कमेंट्स ऑन यूट्यूब. तो अब मैं दोनों भी ओपन नहीं कर सकता हूं बिकॉज आई विल बी लूजिंग द इंटरेस्ट, मतलब फोकस विल बी लॉस्ट. सो देयरफॉर आई एम वाचिंग योर कमेंट्स ऑन यूट्यूब. इज इट फाइन? You can post your comments. There is no problem. Is it fine, sirs? Is it fine? Is it fine? Okay, no problem. Now observe here, sirs. एक काम करते हैं, sir. Let us do one thing. Dear students, now we also take this section. Please observe here. Let us take symmetric eye section. Listen carefully. Let us take symmetric eye section. What do we mean by symmetric eye section? Look at. These flanges are exactly same thickness, same size. Now you understand carefully. This is one axis, principal centroidal axis. This is another axis. So dear students, so if I fold the top one, I get the bottom one. If I fold the left one, I get the right one. So it too has double axis of symmetry. My dear students, whenever we have a double axis of symmetry, when the member is loaded, something like this, understand carefully. There is a member, listen carefully. There is a member, say it is a rectangular section. Say or square section, no problem at all, no problem. Or it is something like this, a circular section, no problem at all. Now,
Let us load like this. Let us load like this. The load is passing through this G. The load is passing through this G. You will be seeing that it simply bends. It simply bends and you don't find any twisting. For example, my dear students, for example, let us take this rectangular section and let me apply a point load. It bends. Very good. Now, something unusual is happening. But before we start that, let us try to understand this. Instead of applying a load here, now let us apply a load something like this. I repeat, sirs, instead of applying a load here, एक second, let me erase this. Instead of applying a load here, let me apply, and this is known as eccentric transverse loading. This is transverse loading. This is axial loading. Beams are transversely loaded members. Let me apply a load like this. So when I apply a load like this, you will observe very clearly. Now I'll replace this into something like this. Look at. So actually this is the applied load. This is the applied load. So I will, from mechanics, you know, if I replace something like this, two equal and opposite, dekho, what is happening, sirs? Please look at carefully. There is no net effect of these two. There is no couple formed by these two green forces, and there is no, and this P upward downward cancel with each other. So there is no net effect. And okay, now look at what are these two trying to do? They are trying to twist this member. It means when even when the member is having double axis of symmetry, if the load is not passing through this, and if the load is eccentric, then you find some twisting of the member. So please, my dear students, don't think that when the load is passing through the CG, so in case of double symmetric, there is no twisting, there is only bending. But even when you have double axis of symmetry, if the load is not passing through G, if it is passing somewhere here, it will twist. Very good. This I think you have understood very clearly. There is no problem. Now, कुछ अलग दिख रहा है, sir. Now, whenever, please understand, whenever a member has two axes of symmetry, when the load is passing through CG, so there is no twisting, there is a pure bending. For example, you take circular section, let it pass to this, and you take I section, which is symmetric. Both flanges are equal, and when the load is passing through CG, it's like this. I'll show you very clearly. Don't worry. आपको सब आएगा, sir. Today I will try my level best to give all the things about shear center. But the only thing, इधर देखो. Now look at, sirs. This is the member. Now I am applying a load here. Observe here. What is happening? Simply it is bending. Because the load is passing through this G, which is G, and therefore now it is passing through this. It has two axes of symmetry. So therefore there is only bending, but there is no twisting. Exactly. Wonderful, my dear students. Don't worry about all these things. You will get everything in a crystal clear manner. It's my promise. But you should have patience. But something unusual is observed here. Please look at, sirs. Please understand. Let us take a C section. Now you know this is one principal axis. This is another centroidal axis because CG is passing through this. But you know that this is the axis of symmetry because if you fold this, you get this. But this is not the axis of symmetry. So when you are folding, you will not get this. Ab dekho, sir. When the load is applied along the axis of symmetry, it's something like this. You just find bending. You don't find any twisting. You just find bending. When the load is applied along the axis of symmetry, this is the axis of symmetry. Observe here. This is the axis of symmetry. When you fold, you get this. So when you are applying the load along the axis of symmetry, you don't find any twisting, you just find bending. It's something like this, my dear students. I will take this. एक बार देखना. I will take this. देखो. Now, this is one axis and this is one axis. Sorry. No problem. Don't worry, sirs. Don't worry. I will take care of everything. There is no need for you to worry. देखो. Now, observe here. So, please observe.
this is one axis. So if I apply a load like this, if I apply, this is the axis of symmetry, this is the axis of symmetry. If I apply a load like this, simply it bends. But now what we do is just to try to reverse it. Let us take this. Now, you know, centroid is somewhere here. This is one axis. This is the axis of symmetry. This is one axis. But this is not the axis of symmetry. Now I will apply load here. You just see, you take casing pipes, electrical casing pipes. If you want to observe, you can do that experiments. Okay. Now I will apply, instead of applying a load like this, ab dekho, instead of applying the load along the axis of symmetry, now I will apply load like this. Look at, now I will apply load like this. Dekho ek baar. Now I will apply load like this. Is it along the axis of symmetry? No. So when I apply load like this, which is not the axis of symmetry, you find something like this. देखो, you just see warping, मतलब it is twisting. In which case it is twisting? When you have two axes of symmetry and when the load passes through CG, there is no twisting, there is only bending. When there is a transverse load. Even in case of double symmetry, when the load is not passing through G, if it is eccentric transverse load, there is a twisting. No problem. That is obvious. We can understand, we can see that. But now, please understand, my dear students, in this case, देखो एक बार. So now I am applying a load like this. But please note down that this is the axis of symmetry because ये और ये same है. So but now I am not applying like this. In this case we have applied. So there is only bending. But here you are finding twisting. Let me show you the figure. Please first we'll see what is happening. Then we will see why it is happening. And physically we will feel by taking each fiber open करके देखेंगे. एक ही तो request है, patience रहना है. सभी को समझ में आ रहा है सर यहाँ तक? Now, देखो sirs, now I have applied a load like this. Look at, is it along, this is the center of gravity. Okay, now I have applied load. This is the axis of symmetry, but this is not axis of symmetry. So when I applied a load like this, you are seeing something like this. It is twisting. It is something like this. You have seen something like this. The cross section is twisting. Now let us see why that is happening. And I will give you the concept of shear flow. And beautifully I'll be deriving that, something like in fluid mechanics we have seen whenever the discharge is splitting, so this total discharge is equal to Q1 plus Q2, and here I am going to prove and physically you will be feeling it. So till now is it clear sir? अगर आप yes बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा sir. If you say yes then I'll proceed. बोलो Wonderful, sirs. Till now, there is no problem. Wonderful, my dear students. Let's proceed now. Aram se dekho, sirs. Now, what we do is, dear students, let us take this section. Let us take this. I have drawn, sir, for you. So, let us take this wonderfully. Now, एक second देखो. Let us take C section and we have applied. It is a cantilever and the cross section is C section. It is a cantilever and the cross section is C. No problem at all. Please, sirs, visualize carefully. Now, this is a C section. And there is a point load here. Now, tell me, this is the fixed end and this is the free end. So, at the free end, we have applied a point load. Great, sirs. You know very well, when I move in this direction towards the fixed end, what is the bending moment? For example, let this length be X. So what is the bending moment at the section AB? So it will be P into X. Absolutely fine. So this is the bending moment at a section AB. Now let this length be dx. So what I am doing is, you tell me what is the bending moment at EF. Dear students, यहाँ पे bending moment चाहिए. And you know this distance is dx. So load is P, x plus dx. So therefore it will be P into x plus dx. Absolutely fine. There is no problem at all. So what is your observation? When I move towards fixed end, the bending moment is increasing linearly because it is a function of x. So it is increasing linearly with the distance. Now, यहाँ तक कोई problem नहीं है sir. What we do is, dear students, what I do is, I will cut this. देखो, I will take any section which is at a distance x. Listen carefully. What is this distance? Okay. What is this distance x? Which is at a distance x from here. Now, please observe. So, and this length is dx. So, मैं क्या किया? What I have done is,
I have taken this section. I have taken this section and this is removed and this length is dx. So it's like this. Look at carefully. It's like this. Please listen carefully. मैं क्या किया देखो ये वाला section. Please listen carefully. Look at carefully. This is one A B C D. देखो एक बार. A B C D. A B C D. This is A B C D. A B C D. A B C D. And back वाला देखो एक बार. And back वाला back. This one. This is E F G H. E F G H. And this length is dx. So this length is dx. I repeat sir. देखो एक बार. A B C D front portion. Back is E F G H. And this length is dx. So I am showing you like this. देखो एक बार इसको यहां लिखेंगे sir. Do not worry. So I read this as A B C. You may not be seeing, कोई दिक्कत नहीं, but I'll be showing. This is A B C D. And back side is E F G H. This is E F G H. Don't worry. And you tell me what is the length. देखो एक बार. Don't worry. You even if you cannot see, there is no problem. Now observe here. देखो sirs. This is the one. I am showing you this portion. ये वाला. What is this length? This perpendicular to the plane of the screen. What is this length? Dx. So I have taken. Now you observe carefully. If you understand carefully, we are taking very thin sections, sirs. हमने बहुत thin sections लिए. तो आपको beautifully logics के साथ बताऊंगा. So have you understood the section? If the section is understood, there will be no problem at all. If you understand section, इधर देखो, I have taken like this. एक बार देखना. A B C D and E F G H and this length into the screen, ये वाला length, this length is dx. तो ये length है आपका dx. So ये यहाँ पे लिखूंगा सर, ये भी लिखूंगा. This length is dx. This length is dx. No problem at all. This length is dx. Absolutely fine. नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं सर. I'll show you. ये वाला length. This length is dx. This length is dx. Okay, no problem at all. Let's proceed, sirs. अब आगे बढ़ेंगे. Let's proceed. No problem at all. Absolutely fine. तो ये समझ में आया ना? This is front ABCD and back is EFGH and this length is DX. Observe clearly now. एक बात देखना sir. So if I please listen, this thickness is very small. अब मुझे बताओ, you know the concept of complementary shear. What is the concept? मैं भी थोड़ा वो explain करूंगा sir. You don't have to worry about that. मैं explain करूंगा sir. एक इधर देखो. Assume that there is a member. मैं पूरा clear करूंगा sir. Don't worry. There is a member like this. So there is a member like this. बहुत carefully देखना sir. There is a member like this. Absolutely fine. So this is okay, no problem at all. Now, okay, कोई दिक्कत नहीं sir. No problem at all. Now, this is right, this is left. Now, for example, there is a shear force like this. There is a shear force like this, and at this it will be back tau. अगर ये ऐसा घूम रहा है, तो it is in static equilibrium. If these two are trying to rotate in this direction, and resisting should be in this direction. So देखो ऐसा right and left. समझ में आया नहीं है? Let me explain very clearly. दोबारा बताऊंगा सर, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, because this is the basic concept. Look at, dear students, अगर यहां पे ऐसा है तो इसके बैक साइड कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस. दिस इज ऑन द बैक साइड. सो दिस इज ट्राइंग टू रोटेट लाइक दिस. अगर ये ऐसा हो रहा है तो रेजिस्टिंग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए. सो देयरफॉर इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. तो सिंपल कॉन्सेप्ट इज हेड जॉइनिंग हेड, टेल टेल. देखो टेल टेल हेड हेड. या प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया सर? देखो, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट लाइक दिस एंड द कॉम्प्लीमेंट्री शेयर इज रेजिस्टिंग इट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. इट्स लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट्स. लुक एट केयरफुली. अगर इस फेस पे देखो एक बार, अगर इस फेस पे ऐसा आ रहा है, इस फेस पे इफ इट इज लाइक दिस एंड बैक फेस पे क्या होगा? रिवर्स. देखो, समझ गए? सो दिस, ये क्या हो रहा है सर? ये ऐसा घुमा रहा है, तो इधर कैसा होना चाहिए? इफ दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. ऑन दिस इट विल बी लाइक दिस. फ्रंट एंड बैक. सो देयरफॉर देखो, हेड हेड ज्वाइन हो रहा है, टेल टेल ज्वाइन हो रहा है. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर सभी को? हैव यू अंडरस्टूड? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर क्लियर?
क्लियर और नॉट क्लियर? आया नहीं रे? अदरवाइज हाउ कैन इट बी इन इक्विलिब्रियम? अदरवाइज हाउ कैन इट बी इन इक्विलिब्रियम? आया? वंडरफुल सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब देखो सर, अब यही काम करेंगे सर. नाउ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. यू टेल मी, देयर इज अ सेक्शन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. There is no problem at all. Till now, there is no problem. So let us proceed, my dear students. आराम से, बिना टेंशन से हम पढ़ लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है. इधर देखो. Now, till now there is no problem. Look at. There is a small section, thin section, बहुत ही thin है, बहुत ही thin है. Let the thickness of this be T. I'll ask you one question. मुझे बताओ सर. If it is a very thin section, now you know, now we are loading. ध्यान से सुनो सर. What is the shear stress at the top? इधर देखो. It's like this, okay? हाँ. You tell me, what is the shear stress at the top? No shear stress. अरे यार, please understand carefully. Shear क्यों होगा? अब देखो. Please observe यार. यहां पे बताऊंगा सर. Don't worry. Let me show you the loaded member. हाँ. अब आप बताइए. अरे ऊपर कुछ है रे मटेरियल. Is there anything above this? No. अरे you tell me, is there any material above? Is there any material above? No. So there is no shear stress. And what is the thickness? And you know very well. अब देखो, we'll do like this. Please understand. एक काम करते हैं सर. Let us take a very large thickness. ये thickness बहुत ज्यादा है. And we will take this situation. One thin and other thick. Please observe clearly. अब यहां क्या हो रहा है देखो. Please observe clearly. Because there is this much material, when there is a load like this, understand carefully, very simple, very simple. Now देखो, ये neutral axis है मान लो, it is thick material, it is very thick. तो अब देखो ना सर, if there is a movement like this, for example, cross section में क्या होगा सर? अगर ये एक force ऐसा act कर रहा है, let us say the force is acting like this, so definitely, please understand carefully, if the force is acting like this, एक बार आप लोगों को नहीं आया, मुझे पता है सर. Let us take this portion. मुझे पता है सर, डोंट वरी, आई नो हाउ टू टैकल. अब देखो, नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट देयर बी टेंजाइल स्ट्रेस. तो क्या होगा सर? एक लेयर ले लेना. अगर ये इसको खींच रहा है तो नीचे वाला क्या करेगा? इफ इट इज ट्राइंग टू पुल, द अदर वन इज रेजिस्टिंग. मींस सो डेफिनेटली देयर इज अ शेयर बिटवीन लेयर्स. And this is known as ये transverse direction है. There is a transverse shear. Already we have discussed in our regular classes. But now if it is very thin, अरे यार अगर thickness बहुत ही ज्यादा है, it's something like this, my dear students. It's like this. Try to understand. Look at this is the cross section. Thickness is very large. So if the bending moment ऐसा bending moment. So if there is a bending moment like this, listen carefully. This is large thick one. Thickness ज्यादा है. तो if the bending moment is acting like, देखो तो क्या हो रहा है सर? इफ द बेंडिंग मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस, सो देयर इज अ शियर. देखो एक बार, इफ इट इज एक्टिंग लाइक दिस, देयर इज अ शियर, देयर इज अ शियर. किस डायरेक्शन में शियर है? इस डायरेक्शन में शियर है. लेकिन इफ द थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड यू नो इफ द थिकनेस इज वेरी स्मॉल, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट द टॉप? कुछ मटेरियल ही नहीं है ऊपर, नो शियर स्ट्रेस. सो एज द थिकनेस इज वेरी स्मॉल, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस हियर? जीरो अगेन. सो यहां पे ऊपर और नीचे, इफ यू टेक सी सेक्शन, what is the shear stress at the top? Zero. What is the shear stress at bottom में कोई material नहीं है. So therefore in this direction, look at in this thickness direction, there is no variation, there is no shear stress. Negligible, I can say negligible. अगर thickness बहुत ही ज्यादा होता है, so definitely there will be shear stress. At least have you understood this, sir? ऊपर what is the shear stress? Zero. नीचे there is no material, zero. So therefore the thickness is very small. तो यहां पे zero, यहां पे zero है. तो in this it is almost zero. But it is very thick. If it is very thick, look at it's like this, my dear friends. अगर ये बहुत ही ज्यादा thick होता है, if I apply like this, yes, there is a shear. But please look at, अगर वो thin है, ऊपर जीरो है, नीचे जीरो है. So therefore in this direction, so as the thickness is very small, the shear is zero. इसका मतलब please understand carefully, इस डायरेक्शन में shear जीरो होगा, thickness. Now what do I mean by this? मैं बताता हूं सर. What do I mean by this? Please understand carefully. Let us take this. देखो एक बार. Here the shear is zero, here the shear is zero. Now actually मान लो there is a shear. अगर shear है तो क्या होगा सर?
if it is very thick, look at carefully, if it is very thick, if there is a shear, देखो एक बार, अगर ऐसा shear है तो if it is anti-clockwise, there will be clockwise. That's why I said head to head, tail to tail, head to head, tail to tail. तो ये डायरेक्शन में shear आएगा कब? When it is very thick. When it is very thick, if there is a shear stress in this direction, देखो carefully, देखो, please don't get confused. Don't get confused. If the material is very thick, and definitely when you are applying like this, there will be shear like this. अगर thickness बहुत ही कम है, तो here it is zero, here it is zero. So in this it is almost zero. तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूं सर, फिर से बता रहा हूं. Now what we try to do is then why the without this shear, why the twisting is coming? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. यस, अब देखो, अब मैं पूरा डिटेल वे में बताऊंगा. Now understand carefully here. हो क्या रहा है एक्चुअली फिजिकली, what is happening? देखो मैं क्या बोल रहा था. What was I telling you? For example, एक सेक्शन ले लेंगे सर. मैं बोलने का क्या था, ऐसा एक सेक्शन ले लो. तो देखो यहां पे शेयर क्या है, जीरो है. तो अगर ये शेयर जीरो है तो ये भी जीरो होगा. जब ये जीरो होगा, सो व्हेन दिस इज जीरो, दिस विल बी जीरो. मतलब इसमें प्लीज ऑब्जर्व, इसमें इन दिस डायरेक्शन देयर आर नो शेयर्स इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में है या नहीं है, अब देखेंगे. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली अगेन, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. अभी आपको नहीं आया या नहीं आया, प्लीज नहीं आया तो पूछो, मैं अभी बताऊंगा सर. आई विल टेल यू अगेन, I will tell you again. Let me tell you very clearly. आपको नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा सर. Let us take a thin section. ये थिकनेस तो नेग्लिजिबल है ना सर. अब ये वाला ले लेंगे, देखो समथिंग लाइक दिस. ये वाला ले लेंगे, लेट्स टेक दिस. ये वाला. So I am taking something like this. I am taking something like this. जब ये जीरो हो रहा है तो ये भी, मैं बोल रहा हूं सर, what I am saying is when this is becoming zero, this will also become zero इस डायरेक्शन में. अब ये डायरेक्शन में छोड़ दो, ये डायरेक्शन में मटेरियल आ रहा है. क्यों मटेरियल आ रहा है? यहां पे मटेरियल कम है, यहां पे मटेरियल बढ़ रहा है. सो इन दिस डायरेक्शन मटेरियल इज इंक्रीजिंग, बट अलोंग द थिकनेस द मटेरियल इज very less. So these variations are very less. If the thickness is appreciable, we have already seen in our regular SOM classes, if the thickness is appreciable, along this, ऊपर कोई material नहीं है, shear stress is zero. नीचे कोई material नहीं, shear stress is zero. And we have seen parabolic variation. Very good, sir. What I am trying to say now is, very simple point. ऊपर there is no material, no shear. So as, look at, here more material is there, therefore there is more shear. तो इधर देखो ना. So for example, I take this thickness, तो क्या होगा सर? shear stress क्या होगा सर? If I take very small thickness, what is the shear stress? यहां पे जीरो होना है. Here it should be zero, here it should be zero. So therefore it is negligible. In this direction shear is negligible. ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ या नहीं? This is clear, then I can proceed. If this is clear, then I can proceed. बोलो. If this is clear, then I can proceed. Clear. Wonderful, sirs. Wonderful. No problem at all. Absolutely fine. There is no problem at all. अब देखो sirs, मैं क्या बोल रहा हूं, अब पूरा समझ में आएगा आपको. Now you can understand everything very clearly. So what I have done is, dear students, ये section लिए. Have you understood this section? Now look at carefully. When the bending moment is applied, like this, and you know this is the neutral axis. तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के लेयर्स पूरे, all these will be in tension, and न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, all these below the neutral axis, all these it will be in compression. These will be in compression. Hope you have understood. Because when I applied a moment like this, so this will move like this. So therefore, ये क्या होगा sir? This will stretch. So therefore, ऊपर वाले न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले will be in tension. Very good. And नीचे वाले, this will be in tension and this will be in compression. At least you know this. And you tell me, where is the bending moment more?
Is it more at the front or back? Anywhere in the class, is it more at the front or back? So when I'm moving like this, the bending moment is increasing. जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो bending moment is increasing. So definitely, you know, bending stresses are given by m by I is equal to sigma by y, or sigma is equal to my by I. All these you know, we have seen in regular class with the derivation. तो अब देखो sir, y. What is y? Distance from the neutral axis. Look at carefully. All these are at the same distance. देखो ये हाइट तो सेम है. So please understand carefully, dear students. ये वाला मैं बता रहा हूं. Please look at this is my dx. Now I have it's like this. अब देखो मैं यही बता रहा हूं. We have taken this section. I have applied. When I applied a bending moment like this, ऐसा आपको ये एक्सिस पे दिखा रहा हूं. तो ये फ्रंट वाला है ABCD. तो क्या होगा सर? These fibers will be in tension and this will be in compression. This is the neutral axis. Similarly, तो ये पीछे वाला है. यस, दे विल बी इन टेंशन. व्हेन आई अप्लाई बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस, ऐसा हो रहा है. तो ये पूरे ऊपर वाले पूरे दे विल बी इन टेंशन, दिस टेंशन, एंड यू नो बॉटम विल बी इन कंप्रेशन. बट प्लीज टेल मी, is the stress, or I mean what I mean is the bending moment same here and here? So if this is the fixed length, board वाला fixed length ले लो board से, और this ये भी section है. So here the load is applied. So if you see the bending moment here, it will be less. If you see the bending moment here, it is at more distance. So definitely the bending moment is more here. So please understand, my dear students. यहां तक सभी को समझ में आया सर? Is it clear? यहां तक क्लियर है? अब देखो सर, now have a look at this. Don't worry. आराम से मैं क्लियर करूंगा सर. Don't worry. Now, dear students, you know, let the bending moment here be m. यहां पे what is your bending moment? P into x. तो what will be the bending moment here? P into x plus dx. तो अगर यहां का bending moment m is equal to P into x, what will be the bending moment here? It will be P into x plus dx. तो इसको मैं लिखूंगा m plus dm. Hope you have understood. This I will write it as m plus dm. अब देखो सर, the top fibers are in tension and this top fibers are in tension. तो ये भी tension में है और ये भी tension में है, and the bottom one are in compression. Now you tell me, this is the bending moment here is m plus dm and the bending moment here is m only. It means there is a difference in bending moment. Hope you have understood. अब इससे क्या हो रहा है सर, एक बार देखना. Let me take this. आराम से सर. Don't worry at all. Do not worry at all. Look at. I have taken an element. What is the length, sir? The length is dx. तो देखो, this is your tension. तो अब देखो, this is, let me take this length as total length. ये वाला length, and you know these are very thin sections. If they are thin sections, the distances are measured central to central. कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर. तो इस सेंटर से इस सेंटर को, let us take the distance as h. Wonderful. And इस सेंटर से इस सेंटर यहां तक, let us take it as b. So please observe here. ये मत बोलना सर ये thickness is very small, तो center to center I am measuring. This is h and this is b. अब देखो सर, now this is the neutral axis. Now you tell me, what is y? देखो, you know the bending stress is maximum at the farthest distance. You may be wondering, sir इसमें bending stresses vary होगा ना क्योंकि y is changing. अरे नमूने, this thickness is very small. When the thickness is very small, my y is almost constant from the neutral axis. This thickness is very small. ये बहुत कम है, तो मेरा y क्या होगा? This is my y. So as the thickness is very small, my y is almost same. So all these fibers have almost same bending stress. Why? Because bending stress varies from neutral axis. अब देखो, here bending stress is different here because y is different here. But as the thickness is very small, hope you are understanding. मैं दोबारा बताऊंगा सर. इधर देखो, as this thickness is very small, it's like this. देखो, this is the section. This is the neutral axis. देखो एक बार. Now, you know I have taken at this. What will be this distance, sir? Can I write this as h by 2? क्या मैं इसको h by 2 लिख सकता हूं? So all these are at the same distance because so bending stress is same throughout this. Now, but what is the bending stress here? Front वाला. Please observe here. What is the bending stress at the front? You देखो. Now you know very well it is m by I is equal to sigma by y. So what is sigma, sir? my by I. Very good. Wonderful, sirs. Now I want force. तो क्या करेंगे सर? Into area. एक काम करते हैं. We will do one thing, sirs.
डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. सो यू हैव टू गिव टाइम. देखो यहां पे प्लीज ऑब्जर्व, द लोड इज अप्लाइड लाइक दिस, सो दीज फाइबर्स आर इन टेंशन. दिस इज h/2. नाउ यू टेल मी, एक काम करते हैं सर, आई विल टेक दिस सेक्शन यहां से. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेक दिस डिस्टेंस एज सम, एक सेकेंड, डोंट वरी एट ऑल. इसको मैं थोड़ा हटाऊंगा और पेन ले लूंगा. लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस टू बी सम s. ये वाला s ले लेंगे सर. मतलब क्या ले रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं. सो आई एम टेकिंग दिस वन, दिस इज द फ्रंट वाला. सो हियर द बेंडिंग मोमेंट इज m. तो एज द लोड इज अप्लाइड, एक्चुअली इससे आगे भी कुछ है और बोर्ड पे फिक्स हो गया. तो दिस द कंप्लीट बीम. सो देयरफॉर व्हेन आई अप्लाई लाइक दिस, तो ये फाइबर्स विल बी इन टेंशन. Top fibers are in tension, but definitely as the bending moment is more at the back, so देखो at the back, so this force is more compared to this force. अब देखो carefully, जब ये force ज्यादा है, देखो ये force ज्यादा है compared to this force, the bending moment is more here, the bending moment is less. So जब ये force पीछे वाला force ज्यादा है, इसको खींचेगा. When it is pulling like this, there will be shear in this direction. अब आपको समझ में आया होगा. There will be shear in this direction. Have you followed, sir? प्लीज बताइए, आप कुछ नहीं बोल रहे. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे कैलकुलेट करेंगे सर. व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस? m/i इज इक्वल टू सिग्मा. कुछ नहीं है सर, चुप बैठो आप. What is y? This is the neutral axis. तो क्या मैं write this y? अब आप बोलो, all these are at almost the same distance, so therefore the bending stress will be same throughout this. So देखो, sigma is equal to my/i. Can you tell me what is? Please note down that what is I? It is the moment of inertia of this complete section about this bending axis. इस पे bend हो रहा है, इस plane में bend हो रहा है about this axis. Wonderful. तो अब आप बताइए, m/i, I is the moment of inertia of this complete section. Y. Can anyone tell what is y? So from the neutral axis ये y है, तो h/2. Very good, sir. Now, same अगर आपको पीछे चाहिए, same. This is at the front. This is at the front. At the back. Look at carefully. At the back, what is the bending moment? So अब बोलो, what is the bending moment? I will write this as bending moment is m plus dm, because the distance is not px, it is px plus dx. Is it clear, sir? Is it clear, my dear students? अब आपको समझ में नहीं आ रहा रे, कैसे स्टूडेंट्स है रे? इधर देखो, ये डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा. Let's see this diagram. हाँ, अब देखो ये वाला डायग्राम, इधर देखो. मैं बोल रहा हूं हमने ये सेक्शन लिया. देखो इधर, प्लीज लुक एट ये वाला. So here, please understand. You will understand now very clearly. So here it is. What is the bending moment? Here it is. The top fibers are in tension. ये होगा. तो यहां पे क्या होगा सर? It will be like this. So मुझे बताओ सर, आप बताओ सर. This bending moment is less. This bending moment is more. If the bending moment is m here, this will be m plus dm. तो what will be? All are at the same distance. ये h/2, ये भी h/2 पे है. Please बताइए, आप लोगों को समझ में आया सर? Please tell me, is it clear? So if you say yes, then I'll proceed. कहां गया रे अपना इक्वेशन? देखो, now look at. Wonderful, sirs. Now it will be m plus dm, m/i is equal to sigma by y. My m is m plus dm, m is m plus m by I into y. What is y? So whether it is this or back, they are at the same height. इधर देखना sirs, neutral axis से इधर देखो, whether it is front or back, I want this distance. Neutral axis से h/2, पीछे वाला भी h/2. So hope you have understood. So now as the load is applied like this. Front one is in tension, back one is in tension. But as the bending moment is more at the back force is more. So therefore now net force acting on this. देखो मैं क्या स्ट्रिप लिया सर, अब मैं आपको बता रहा हूं. So what I have done is, मैं एक काम करूंगा सर. Everyone knows what is this length? dx. अब मैं क्या किया? I have taken this length. Let this length be, एक फाइबर ले रहा हूं सर. I will take one fiber. इधर देखो, इसको मैं कट करके आपको दिखाऊंगा.
देखो एक बार, कैन यू सी? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेट दिस लेंथ बी ds, लेट दिस लेंथ बी s, ये वाला लेंथ s मैं हटा दिया, देखो ये लेंथ लिया s. So there is a force like this, there is a force like this, there is a force like this, there is a force like this. मतलब यहां पे फोर्स m y by i, m by i into y, यहां पे m plus dm. तो which one is more? बैक साइड वाला, बैक साइड वाला. तो क्या होगा सर? It will pull back, it will pull back because of this. But is it coming back? Is it coming back? No. If it is not coming back, someone should resist it. Someone should resist it. नहीं आ रहा सर आपको. जब ये पीछे आ रहा है सर, जब ये पीछे आ रहा है, please listen carefully. Now let me calculate the net force. All of you, have you followed? All of you, have you followed? Have you followed? John Philip, wait. Wait. Now you can message me. So now I will write. Like एक second. What will be the force, sir? You have calculated only stress. You have calculated only stress. What will be the force here? अब देखो ये element ले लेंगे sir. Please listen carefully. I will take this element. Same element मैं ले रहा हूं. इधर देखना sir. एक second. एक second. इसको थोड़ा erase करूंगा. कोई चिंता मत करना sir. Don't worry. Don't worry. ऑफ टॉपिक अभी मत पूछना बेटा प्लीज. सो लेट मी कंप्लीट दिस प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब देखो, नाउ यू नो ऑन द फ्रंट यू हैव स्ट्रेस. स्ट्रेस व्हाट, एंड दिस लेंथ इज s. ये वाला लेंथ आई हैव टेकन एक्चुअली दिस लेंथ आई हैव टेकन s. लेट द थिकनेस ऑफ दिस बी t. लेट द थिकनेस ऑफ दिस बी t. इसका थिकनेस t है. तो अब आप बताओ फोर्स कितना होगा सर? इस पे फोर्स होगा. सो दिस स्ट्रेस इनटू एरिया. व्हाट इज दिस एरिया? एनीवन? व्हाट इज दिस एरिया? दिस लेंथ आई हैव टेकन s and this thickness is t. So therefore now this thickness, this length is, this is s and this thickness is t. So what will be the force? Already front पे load आ गया, front पे stress आ गया. तो m h by 2i into this area. So this is the stress into area. What is the area? S into t. Wonderful sirs. Now what will be at the back? Anyone? Same m के place में m plus dm. Excellent. M plus dm. Everything is same. h by 2i into st. Now please observe here. Now you know if I apply a moment force like this, the top one is in ऊपर वाले tension है, नीचे compression है. So definitely this bending this tensile force is less compared to the backward one. तो क्या होगा? So there is a net backward force. अगर इस पे net backward force है, if there is a net backward force like this, is it coming back? No. Means the adjacent layer is offering a shear on this. The adjacent layer is offering shear on this. And you know this length is dx. तो समझ में आ रहा है सर? The adjacent layer. So therefore when it is coming like this, adjacent layer will off. अरे यार ये ऐसा पीछे आ रहा है. When it is coming back, it's not coming back. Means someone is opposing. Who is opposing? This adjacent wala. It is opposing like this. So the force acting on this will be in the forward direction. The force acting on this will be in the forward direction. Is it clear sir? बताओ सर, is it clear? ये पीछे नहीं आ रहा है, तो अगर इस पे फॉरवर्ड है तो इस पे पीछे होगा. प्लीज बताइए, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सो देयरफॉर ये आ गया सर. वंडरफुल. नाउ यू टेल मी दिस total force, this force is opposing, resisted by this. Now I will write very clearly. तो ये वाला रेजिस्ट कर रहा है सर. दिस वन इज रेजिस्टिंग. अगर यहां पे shear stress tau है, तो what will be this difference बोलो, net force बोलो. Net force is equal to this minus this. What do we get? So you will get dm. अरे यार अगर डिफरेंस ले लेंगे mhst by 2a जाएगा, तो क्या बचेगा? dmhst by 2i. And that is the actually unbalanced force and that is supported by. देखो अगर नेट पीछे है तो रेजिस्टिंग किस डायरेक्शन में आएगा सर? अगर नेट पीछे है तो रेजिस्टिंग विल बी, इफ दिस इज लाइक दिस विल बी द रेजिस्टिंग शेयर. अगर इस सेक्शन एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस s, इफ द shear stress is tau एट ए डिस्टेंस s, यहां से डिस्टेंस s पे अगर यहां पे tau है, तो now you tell me what will be this force, and this force should balance, and this force should balance, and that should be equal to, this is an unbalanced force. एक second please. This is an unbalanced force and that should be equal to this force. And you know the length, समझ में आ रहा है? देखो एक बार, please observe, please understand carefully.
and there is an unbalanced force in backward direction, and this is resisting. If the shear is tau, and you know this length is dx and the thickness is t. Length is dx and the thickness is t. So therefore, now I write this should be equal to tau into dx into thickness is t. Is it clear? Up to this, is it clear, sirs? Is it clear? बोलो रे, इज इट क्लियर? क्लियर? अरे यार, अगर इस पे देखो एक बार, अगर इस पे नेट पीछे वाला फोर्स ज्यादा है, सो इफ द नेट पीछे वाला फोर्स ज्यादा है, तो इज इट कमिंग बैक? समवन शुड अपोज. क्लियर? बोलो रे, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है सर? नो वन इज सेइंग एनीथिंग. अगर आप क्लियर बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा सर. इज इट क्लियर? बोलो रे. क्लियर? क्लियर? परफेक्टली क्लियर. थैंक यू. इट मीन्स अब देखो सर, ऑब्जर्व क्लियरली. अगर यहां पे फॉरवर्ड है, सुनो केयरफुली, तो कैन आई कैलकुलेट दिस? देखो एक बार, टाउ इज इक्वल टू dm बाई dx. इधर देखो, टाउ इज इक्वल टू dm बाई dx. ये t कट गया. टाउ इज इक्वल टू dm बाई dx hs. देखो, टाउ इज इक्वल टू dm बाई dx hs बाई 2i. Can you tell me what is dm by dx? Already we have studied in strength of materials. dm by dx is a shear force. So let me write tau as v. This is the shear force. dm by dx is shear force. hs by 2i. Absolutely fine. No problem at all. यहां तक सभी को क्लियर है सर? Till now is it clear? Till now is it clear, sirs? Till now is it clear? Wonderful, my dear students. ये आ गया shear force. The equation for shear force is, please listen, sirs. Please listen, sirs. Please, my dear students, listen. So at this section, which is at a distance s, the shear is given by anyone? V. क्या था equation? V hs by 2i. V hs by 2i. इधर देखना sirs. Please listen carefully. Let's see how the shear stress is varying. Please look at how the shear stress is varying. आराम से देखो एक बार. How the shear stress is varying. At a particular section, the shear force is constant. We are not changing height. This is constant. देखो एक बार. This is constant. This is constant. The moment of inertia of the complete section is constant. And you know, S is varying. S is varying. S is varying. So as S is increasing, यहाँ S0 है. And S is increasing like this. So how the shear stress is varying with S? And it is varying linearly. So therefore it is varying linearly. यहां तक सभी को समझ में आया सर? Have you followed, sirs? Have you followed, my dear students? अब beauty देखेंगे sirs. Now let's try to understand this very clearly. यहां तक सभी को समझ में आया ना? Okay, okay. Look at sirs. अब देखते हैं sir. Now, I will take this figure so that you can understand. हाँ, एक सेकंड प्लीज. प्लीज डोंट वरी सर, डोंट वरी. VHS by 2i. वेट, अब देखते हैं सर. आराम से देखो सर. मेरा क्वेश्चन ये है सर, प्लीज लिसन केयरफुली. इफ दिस इज योर सेक्शन, ऑफ कोर्स अ थिन सेक्शन. नाउ देखो सर, वी हैव टेकन दिस पोर्शन. अब ये बिट ले लेना सर. अब ये बिट ले लेना. देखो एक छोटा सा बिट ले लेना. अब देखो, माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज ऑब्जर्व द बैक साइड इट इज मोर. अगर बैक साइड, ध्यान से सुनो सर, अब हम बताएंगे इस डायरेक्शन में. लुक एट केयरफुली, लुक एट केयरफुली. नाउ देयर इज, दिस इज ट्राइंग टू पुल. लुक एट द अप्लाइड मूवमेंट इज द नेट अप्लाइड मूवमेंट. ये वाला लीजिए, छोटा स्ट्रिप लीजिए सर. लेट मी टेक स्मॉल स्ट्रिप. ये वाला लीजिए. एंड द बैकवर्ड इज मोर. अगर बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है तो शेयर किस डायरेक्शन में होगा सर? इफ दिस फोर्स इज मोर, व्हाट विल बी द शेयर? ये वाला होगा सर. दिस विल बी शेयर. तो अगर यहां पे शेयर ऐसा है, प्लीज ऑब्जर्व क्लियरली. इफ द शेयर इज लाइक दिस, ऑलरेडी यू नो,
तो अब क्या होना चाहिए, अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है, अगर शेयर ऐसा हो रहा है, तो इस पे बैलेंस के लिए कैसा होना चाहिए सर, हेड टू हेड। तो इस इट मींस इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है सर, नहीं आया सर। अरे यार अगर यहां पे इस पे अगर शेयर ऐसा है, इट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस, सो टू अपोज दैट इट इज कमिंग लाइक दिस हेड टू हेड, मींस इस थिकनेस सेक्शन में एक स्ट्रेस ऐसा आ रहा है, स्ट्रेस ऐसा आ रहा है। प्लीज टेल मी आर वी क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर? नहीं आया सर आप लोगों को, प्लीज टेल मी, मैं दोबारा बताऊंगा सर, प्लीज प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, एक बड़ा फिगर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, दैट्स व्हाई बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट सर। देखो अब देखो, प्लीज लिसन नाउ, आई हैव टेकन दिस सेक्शन सर। अब देखो ये वाला सेक्शन पे बताएंगे, तो नेट दिस इज मोर, ये वाला फोर्स ज्यादा है पीछे वाला, तो शेयर कैसा होगा, इस पे ऐसा होगा। अगर यहां पे ऐसा होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, हेड टू हेड, सो इफ अगर ये ऐसा हो रहा है, इफ इट इज लाइक दिस, इफ इट इज लाइक दिस एंड हियर इट शुड बी लाइक दिस, सो देयरफॉर हेड टू हेड कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी। इसका मतलब क्या है सर, एक स्ट्रेस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है सर। सो लाइकवाइज, बट इट इज लीनियरली वेरिंग, लीनियरली वेरिंग। व्हाई इट इज लीनियरली वेरिंग? ऑलरेडी यू हैव रिटन एन इक्वेशन, व्हाट वाज दैट इक्वेशन सर? VHS by 2I means the shear stress at a section is constant, H is constant, I is constant, tau is directly proportional to S. इसका मतलब वो linearly increase हो रहा है यहां तक, इसका मतलब the shear stress is increasing linearly up to this, linearly up to this. So it is like this, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, so therefore it is moving something like this. Please बताइए, is the direction clear? You are not saying anything sir. Yes, absolutely. Is the direction clear my dear students? क्या ये direction clear, सबको पता चल गया? Please tell me, if you say yes, then I'll proceed. Is the direction clear? Is the direction clear? Now, understand carefully. Is the direction clear? But यहां पे क्या होगा सर? ध्यान से सुनो सर. यहां पे क्या होगा? You tell me. On the top there was tensile. At the back it is compressive. टॉप पे टेंजाइल था, इसलिए ऐसा फ्लो हुआ. बैक पे, नीचे क्या है? कंप्रेसिव. लुक एट केयरफुली. एट द टॉप देयर वाज टेंजाइल, सो इट वाज बेंडिंग लाइक दिस. सो टेंजाइल था तो ऐसा फ्लो हो रहा था. अगर कंप्रेसिव है तो उल्टा फ्लो होगा. इफ यू वांट मी टू डिराइव, आई कैन डिराइव एंड एक्सप्लेन आल्सो, बट आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी. इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां तक सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? Is the flow clear, sir? Is the flow clear? Is the flow clear? तो इसका मतलब है as there is, देखो यहां से क्लियर करूंगा सर, प्लीज. आई विल टेक दिस वन. हाँ, तो as this force is more, look at, कहां गए रहे हो? हाँ, देखो एक बार, ये फ्रंट वाला ये है ना, वंडरफुल. सो प्लीज ऑब्जर्व, एज द बैक फोर्स इज मोर, एक्चुअली द फ्री एंड इज लाइक दिस, सो इट इज बेंडिंग लाइक दिस. ऐसा बेंड हो रहा है तो डेफिनेटली ये बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होगा. सो देयरफॉर एज द नेट अनबैलेंस फोर्स हियर इज मोर, द शियर इज रेजिस्टेड इन दिस डायरेक्शन. सो द शियर इज रेजिस्टेड इस डायरेक्शन में. फ्रंट वाल इधर देखो ऐसा रेजिस्ट हो रहा है. देखो द शियर इज, सो एज इट इज ट्राइंग टू मूव, शियर इज लाइक दिस. अगर यहां पे ऐसा आ रहा है तो अभी तो बताया यहां पे हेड है, तो देखो इफ इट इज टिल्टिंग लाइक, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस and resisting should be like this, complementary. So therefore head to head. अब देखो head to head, तो ये वाला head, ये head, तो therefore if this is the C section sir, इधर देखो अगर ये C section है तो इधर से कैसा फ्लो हो रहा है? देखो ऐसा ऐसा आ रहा है. इधर the stress is less, here it is more, here it is more, and it is increasing and likewise it is flowing. So similarly इधर क्या होना चाहिए? अगर इधर अंदर आ रहा है तो यहाँ पे फोर्सेस आर, देखो let me explain sir, आपको नहीं दिख रहा है ना. अगर इधर ऐसा आ रहा है, प्लीज लुक एट केयरफुली. So please let me explain. Don't worry, मैं हूं ना. देखो ये है, please observe. तो actually this backward force is more because the bending moment is more at the fixed end. Fixed end आपके क्या बोलते हैं, स्क्रीन के तरफ है. So as the backward force is more, the shear is resisted in the front direction. देखो front direction. अगर ये front है तो ये ऐसा हो रहा है. अगर ये front है तो ये shear इधर back होना चाहिए. अगर ये ऐसा हो रहा है तो resisting should be like this. तो it means इस face पे it's coming like this. So these are the faces. So therefore it is coming like this. ये पूरे faces है, देखो यहाँ पे निकाला मैं. प्लीज ऑब्जर्व हियर. सो यहां से निकाला, सो ये ऐसे आ रहा है सर, ये ऐसे आ रहा है. तो ऑन द टॉप अगर लिफ्ट आ रहा है तो बॉटम, ये टेंजाइल है तो लिफ्ट आ रहा है, तो कंप्रेसिव है तो किधर आएगा सर? ये राइटवर्ड फ्लो हो जाएगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज, सो ऐसा आके इधर आ रहा है, बट व्हाट इज द डायरेक्शन इन दिस वेब?
ये तो फ्लैंज में देखे सर, व्हाट इज द डायरेक्शन इन द वेब, अभी एस्टैब्लिश करेंगे। टिल नाउ इज इट क्लियर सर? क्या ये बात सभी को समझ में आ गया सर? नहीं आ रहा सर आप लोगों को? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? पक्का? यस सर क्लियर। बोलो रे, आपके कमेंट्स ही नहीं आ रहे। आई एम अनेबल टू सी योर कमेंट्स। समझ में आ रहा है? 100% क्लियर। इंजीनियरिंग लेक्चर्स, वाह। अब देखते हैं सर, इफ दिस इज क्लियर विल प्रोसीड नाउ। एक्चुअली फिजिकली क्या हो रहा है सर, व्हाई इट शुड इंक्रीज लीनियरली, एक बार मैं फिजिकली बताऊंगा। प्लीज लुक एट हियर, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज ओनली ऑन दिस एरिया। सो हियर द ओनली ऑन दिस एरिया। इफ आई इंक्रीज, देखो देखो एक सेकंड, सो प्लीज ऑब्जर्व, on this the unbalanced force is on this area. If I increase the number of strips, the area is increasing. When the area is increasing, the force is also increasing. This force is unbalanced force is also increasing. That's why the resisting shear is also increasing. Let me explain clearly. First it was acting only on this area. इस area पे act कर रहा था, देखो only on this area, इस this area पे। So अब देखो, as S is increasing, as S is मतलब यहां ऐसा जा रहा है, तो as S is increasing, so when I'm adding more strips, देखो what is happening, when I'm adding more strips there is more area, when there is more area there is more force, when there is more unbalanced force there is more shear, so it should resist, it's in static equilibrium. That's why the shear stress is increasing from this end to this end, it is increasing. यहां तक सभी को क्लियर हुआ सर? Till now is it clear sirs? वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हो गया ना बात, अब आपको समझ में आ गया सर। सो इफ इट इज लाइक दिस, डियर स्टूडेंट्स, इफ इट इज लाइक दिस एंड हियर एनीवन, इट विल बी लाइक दिस। एक सेकंड, एरोस क्लियरली बताऊंगा सर, एरोस के साथ साथ खेलेंगे हम। विल प्ले विथ एरोस, डोंट वरी। वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, अब देखो, अरे क्या हो रहा है, हमें ये बोर्ड का आदत नहीं है, क्या करते सर, मजबूरी है। इट इज लाइक दिस, लेस इंक्रीजिंग, मच मोर लेंथ, यहां पे मोर, देखो लेस एंड समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली। सो इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली. It is increasing linearly. Now the question that comes is, this is okay, because both are of opposite nature. What do you mean by opposite nature? Here it is tensile and here it is compressive. For tensile leftward, compressive it is rightward. What about this? Let us see what about this. एक बार देखेंगे सर, इसका मतलब क्या है? What about this? अब देखते हैं सर। Wonderful sirs, listen carefully. Now have a look at this. Please listen carefully. Can you tell me what is the shear stress here? Look at carefully. अब देखो सर, अब आएगा ब्यूटी सर। नाउ कम्स द ब्यूटी, प्लीज लुक एट। अब देखो, प्लीज ऑब्जर्व हियर, नाउ कम्स द ब्यूटी। नाउ सो मच इज रेजिस्टेड हियर, ये वाला ले लेंगे सर, ये अब देखो, दिस इज द वन। अब इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज द वेब, आई एम सेपरेटिंग, बोथ आर जॉइंट हियर, दोनों को सेपरेट कर रहा हूं सर। अब देखो सर, देखो, अब लुक एट केयरफुली, दिस इज केप्ट हियर, वंडरफुल। यू नो वेरी वेल, अगर ये बात कर रहे तो हम, यू टेल मी इन विच डायरेक्शन इट इज एक्टिंग। अब नहीं आ रहा है सर, आपको एक बार बताता हूं, सो प्लीज ऑब्जर्व, आई विल रिमूव एवरीथिंग, पूरा निकाल देंगे सर, पूरा निकाल देंगे, एंड एवरी कंप्लीट फोर्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर प्लीज ऑब्जर्व, इफ द कंप्लीट फोर्स इज इन द, ये वाला है फ्लैंज, देखो ये फ्लैंज है, टॉप फ्लैंज, दिस इज द वेब, दिस आई रिपीट, दिस इज द वेब and this is the flange. I have removed flange. Flange is exerting a force in the backward direction. देखो एक बार, please observe here. Flange is exerting, this flange is exerting backward force on this web. Yes or no? Because on this there is a complete backward force. अगर ये complete backward है, this complete flange will exert on the web in the backward direction. But on this it will be forward. अरे यार, मैं एक बार confuse मत होना सर. There is an unbalanced force in the backward direction like this. When there is unbalanced force, this web will oppose in this direction.
बट ऑन द वेब इट दिस इज द, देखो देयर इज अनबैलेंस फोर्स ऑन द फ्लैंज, तो फ्लैंज ऐसा पुल कर रहा है, फ्लैंज पे ऐसा फोर्स आ रहा है, ऐसा फोर्स आ रहा है, तो वेब क्या करेगा, इट विल एक्सर्ट लाइक दिस बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। इफ द वेब इज एक्सर्टिंग लाइक दिस, फ्लैंज विल एक्सर्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑन द फ्लैंज इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। नहीं है सर, वॉट एवर दिस इज एक्सर्टिंग, लेट मी रिपीट सर, लेट मी रिपीट, क्या स्टूडेंट्स है रे, जान ले रहे, मेरा जान ले रहे। ये सी सेक्शन का कंप्लीट टॉप वाला, और ये है, लुक एट सर, नाउ लुक एट केयरफुली, देखो ये देयर इज अनबैलेंस फोर्स बैक, so if there is unbalance force at the back, this web will pull it in the front so as to be in equilibrium. When web is pulling front, this flange will put it in the backward direction. अब देखो, अगर ये बैकवर्ड है तो टेल टू टेल, यहां पे अगर ये बैकवर्ड है टेल टू टेल, तो कैसा फ्लो हो रहा है सर इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, कैसा फ्लो हो रहा है सर, प्लीज अंडरस्टैंड, ये कैसा फ्लो हो रहा है, अभी तो देखे, जस्ट नाउ यू सॉ सर। सो प्लीज, इफ दिस टॉप पोर्शन इज, this is the flange, देखो this is the flange, if the total force is acting in backward direction, means flange is exerting a backward force on this web, on the web, तो अगर ये बैकवर्ड है तो ये ऐसा, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड है टेल टू टेल, अगर बैकवर्ड है तो हेड विल बी दिस साइड, सो देयरफॉर टेल विल बी दिस साइड, तो टेल टू टेल, तो इधर कैसा ना सर, इफ इट इज लाइक दिस एंड इक्विलिब्रियम के लिए लाइक दिस होना चाहिए। प्लीज, हैव यू अंडरस्टूड सर, हैव यू अंडरस्टूड? अगर यहां पे ये फ्लैंज वाला पीछे कर रहा है, तो अगर ये फ्लैंज इसको पीछे कर रहा है, तो हेड टू हेड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर विल बी इन दिस डायरेक्शन। नहीं आ रहा है सर आपको? अरे यार, वेब को निकाल के बताऊंगा सर, लेट मी रिमूव द कंप्लीट वेब को निकाल के बताऊंगा सर। चलो इसको वेब मानो सर। तो ऑन द वेब अगर ये बैकवर्ड आ रहा है तो ऐसे घूमेगा। सो लुक एट, ऑन द वेब इफ द शेयर इज बैक लाइक दिस, फ्रंट लाइक दिस, अगर ये फ्लैंज ऐसा एग्जर्ट कर रहा है, तो अब बोलो ये इक्विलिब्रियम होने के लिए फ्रंट पे क्या चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, मतलब इट शुड बी डाउन। अगर ये बैक है, इफ द फ्लैंज इज एक्सर्टिंग अ बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड यहां पे, फ्रंट यहां पे, ये ऐसा मूव हो रहा है। When it is moving like this, how can this be in equilibrium? It will be in equilibrium, so therefore there has to be force in the downward direction. So therefore now it should be in the downward direction. So इसमें ऐसा आ रहा है सर, इधर देखो। So therefore now it is in the downward direction. So this is nothing but something like पानी इधर से डाले तो फ्लो ऐसा हो रहा है। Is the flow of shear clear, sir? Is the flow of shear clear, sir? Is the flow of shear clear, sir? नहीं, ऐसे टफ कॉन्सेप्ट्स आपको YouTube पे क्या चाहिए? ओ मजा, ओ बस यही चाहिए। मस्त फील आ रहा है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फ्लो ऑफ shear, sir, and already have shown in the vertical direction. So the variation is parabolic. क्लास में मैं बताया था सर, क्लास में मैं बताया था in this direction how it is parabolic I have derived. अभी मैं derive नहीं करूंगा। So ये होगा flow. तो now the question that comes to our mind is, sir, why there is a twisting? Why there is a twisting? Look at carefully. अब देखते हैं सर, आराम से देखो। This is the channel section. See the flow. Okay, look at carefully now. My dear students, this is giving me a net horizontal force. इस डायरेक्शन में एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है। ये सब हम आपको कहां पे दिखा रहे हैं? फ्रंट पे, फ्रंट फेस पे दिखा रहे हैं। और देयर इज अ नेट फोर्स लाइक दिस। अब देखना सर, एंड दिस वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड विथ योर। अब आप देखो सर, एक बार मेन मॉडल पे आइए, एक सेकंड, मेन मॉडल पे आइए। हाँ, मेन मॉडल पे आइए। हाँ, इधर देखो, देखो एक बार, प्लीज ऑब्जर्व हियर, प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन मॉडल। अब देखना सर, यहां दिखा रहा हूं, अभी नहीं सर, अभी इसको अभी मत देखेंगे। सो विल डू वन थिंग, लुक एट केयरफुली, आराम से। एक सेकंड प्लीज, 1 second प्लीज। समवन इज कॉलिंग, इसको म्यूट कर देंगे। देखो सर,
लुक एट केयरफुली, ये फ्रंट वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस, इधर देखो सर, इफ इट इज लाइक दिस, व्हाट विल बी देयर इन द बैक फेस? बैक फेस पे उल्टा होना चाहिए सर, इधर देखो, वेरी सिंपल। इफ अगर फ्रंट वाला ऐसा हो रहा है तो देखो सर, मैं आपको बताऊंगा सर, डोंट वरी। हाँ, इफ द फ्रंट फेस इज लाइक दिस, देखो फ्रंट पे, इधर देखो, ऐसा फ्लो हो रहा है, फ्रंट पे ऐसा हो रहा है, बैक पे क्या होगा सर? उल्टा होगा ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अपोजिट, उल्टा होगा ना। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर? प्लीज बताइए सर। नहीं आ रहा सर, अब मैं क्या करूं इसको? सर नहीं आ रहा है, चलो इसका भी इलाज बताऊंगा। ये कट कीजिए, ये कट कीजिए, दिस इज द फ्रंट फेस, ये कट कीजिए सर, आई विल शो यू, आई विल शो यू। अब देखो सर, अगर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अब देखो सर, ये बैक वाला है, दिस इज द बैक वन, दिस इज द बैक वन। अगर ये ऐसा आ रहा है, इट्स लाइक दिस एंड इट्स द फ्लो, तो इधर कैसा होना चाहिए सर? इट शुड बी हेड, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा जा रहा है तो इधर ऐसा जाना चाहिए। इफ इट इज फ्रंट इज लाइक दिस, इफ द फ्लो इज लाइक दिस, देखो ये फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला, एक सेकंड प्लीज, क्या स्टूडेंट्स है रे, ये कौन है? यस, यस, इन द वेब मैक्सिमम शेयर फ्लो, आई एम शोइंग यू एट द फ्रंट। अगर बैक का देख रहे हैं, इट विल बी उल्टा, जस्ट उल्टा होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है, इफ इट इज बैक, इट विल बी फ्रंट, बिकॉज फ्लो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो इट विल बी लाइक दिस। तो अब देखना सर, नाउ हैव यू अंडरस्टूड द फ्लो सर? हैव यू अंडरस्टूड हाउ इट इज फ्लोइंग? इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड मूवमेंट्स। नाउ व्हाट वी डू इज, लुक एट केयरफुली। तो एक सेकंड इधर देखना सर, प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैक वाला पोर्शन शो कर रहा हूं सर, ये बैक वाला पोर्शन शो कर रहा हूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इट मींस ये फ्रंट वाला और बैक वाला, इट मींस देयर इज अ नेट फोर्स लाइक दिस, लेट अस से F1, ये नेट फोर्स लाइक दिस F2, बट दोनों सेम है, तो F1 F2 विल बी सेम। Now you tell me what are these two doing? So this is balanced with our applied force. आपने तो force apply किया, ये force और ये force balance हो गया. This applied force is balanced with this. What about this? Yes, these two are also balanced, but they are separated. तो क्या होगा sir? Because these two are separated, there will be twisting in the cross section. That's why you have seen something like this. इधर देखना. That's why you have seen something like this. इधर देखो, मैं अभी बता रहा हूं. हाँ. Please observe clearly. अब देखो, ऐसा force, this is the flow of shear, this is the flow of shear, this is the flow of shear. So I have applied a load P like this. अभी ये मत देखना sir. I have applied a load P here. I have applied, this is the resisting. The applied load is like this, resisting is like this, no problem. These two are balanced. But what about this? Of course, this rightward and this right, एक second, मैं पेन ले लेता हूँ. This force and this force is balanced. एक second देखना. ये वाला फोर्स बैलेंस हो गए, बट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, व्हाट इज हैपनिंग? कपल इज फॉर्म्ड. दैट्स व्हाई इट इज ट्विस्टिंग इन द क्रॉस सेक्शन. इधर देखना सर, दैट्स व्हाई इट इज ट्विस्टिंग इन द क्रॉस सेक्शन. प्लीज ऑब्जर्व, एज देयर इज अ फ्लो ऑफ शियर लाइक दिस. देखो एक बार व्हाइट ले लेता हूं. हाँ देखो, सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. एज देयर इज अ फ्लो, एक फोर्स ऐसा आ रहा है. अरे व्हाइट वाला, व्हाइट में व्हाइट कहां अच्छा दिखता है. हाँ, look at carefully. So if this is like this, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये applied, ये वाला resist कर रहा है, लेकिन these two, even though they are balanced, it is creating a couple because of this force is same. But don't think that when forces are same, it is an equilibrium. Moment should also balance. They are separated by distance. That's why ये force separate होने के कारण एक couple आ रहा है सर, एक couple आ रहा है. So that's why it is twisting. That's why it is twisting. This is the beautiful example of shear flow, and therefore it is twisting, sirs. अब क्या करेंगे sirs? Now, thin sections are very weak in shear. They are weak in shear. Torsional shear stresses are developed, and it will fail. It will fail. It will fail. क्या करेंगे sirs? अब आप बताइए sirs. Now क्या करेंगे बोलो? Now please observe, my dear students. Now what I do is, dear students, what we do is, अब carefully देखना सर, कहाँ गया फिगर? हाँ, what I do is, if there is a force like this, ये बैलेंस हुआ,
अब हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्ट करने के लिए what I do is I will not apply force like this, but I will apply away from this, away from this, away from this. अब देखो, the moment due to this is causing anti-clockwise, this is causing clockwise. So anti-clockwise, clockwise movements are balanced. Now there is no twisting. Even if it is unsymmetric, there is no twisting. And such a distance, देखो एक बार, such a load को shift कर रहा है. Originally the load was here, therefore it was twisting. But now I shift the load here. कहां शिफ्ट किए, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब ये डिस्टेंस शिफ्ट किए. एंड नाउ यू सी P into E is anti-clockwise, P into E is anti-clockwise, and moment of this is what, FF into H. देखो इसका मोमेंट यहां पे कितना होगा सर, FF into H by 2, this is clockwise. and इसका मोमेंट इधर क्या होगा सर, FF into H by 2 clockwise, FF into H by 2 clockwise. and इसका भी क्या होगा, I have taken the moment of this force about this, and what is the moment of this, again FF into H by 2 plus FF into H by 2, तो कितना होगा, it will be FF into H. so this moment should be equal to this moment, that is FF into H. and this distance where you are shifting the load, now you may be saying, sir, the channel is like this, how can you see, originally the load was placed here, how can I place the load here, there is no place now, there is no material. yahan pe we'll make some attachment and place the load here. So it was actually twisting like this. Now if I apply, bolo sirs, it was when the load was applied here it was twisting. So when I shift the load by some distance, and now क्या होगा, so therefore because of this what is happening, my dear students, ये ऐसा twist हो रहा था. अब the load is like this, now it is causing anti-clockwise, this is causing clockwise. so P into E is clockwise, the anti-clockwise ये should be equal to FF into H. and already we have calculated the force, shear force. so this E is equal to FFH by P. P is the shear force, and FF we have already calculated. How we calculated all these I have shown. And this distance by which you should shift so that there is no twisting, only there is bending. कोई twisting नहीं, only bending. And that point where the load is shifted from the original, and this distance is nothing but eccentricity E, and this point we call it as shear center. Please tell me now, what is shear center? It is the point where the load is applied so that there is only bending and there is no twisting. So this is very important concept in thin sections involving unsymmetric bending. Have you followed, sirs? तो अगर शिफ्ट कर दिए एंड इस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इट इज नोन एज shear center. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन सर, देखो इधर, प्लीज लुक एट. नाउ इस केस में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इस केस में वेयर इज द shear center, सर? Look at, when you have double axis of symmetry, this is one axis, this is one axis, so directly you keep it here. So if the load is applied here, there is no twisting, only bending, so therefore this will be shear center. So if it is circular section, it is a axis, दोनों axis of symmetry पे intersect करना. Yes, whenever you have double axis of symmetry, the intersection of both axes will be shear center, क्योंकि यहाँ पे load apply करेंगे, there is no twisting. Wonderful, sirs. Now please observe here. Up to this is it clear? Up to this is it clear? अभी हम देखें. Now if it is a C section, if I apply load here, there is no twisting, so there is no twisting. But if I apply something like this, अगर ये ऐसा है, if the load is applied something like this, somewhere like this, so there will be twisting. So therefore इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे attachment लगाएंगे. Attachment लगा के I'll shift the load, and this is यहाँ पे load था पहले, and whatever you have shifted, that is this is the shear center, this is the shear center. Now I'll come up with some more models, like I will be taking L section, T section, and with this I'll be showing the flow along with the derivations. Please tell me, have you understood, sirs? Please, if you have understood, please leave your comments so that it encourages us. मैं कभी नहीं बोला आपको वॉच करो, कम, लाइव, शेयर, लाइक ठोको, लाल गुलाब का हे दो, कभी नहीं बोला sirs. And I am not saying also. If you have understood, please appreciate the hard work. If you have not understood, please tell us we have not understood. So there is no problem. Please बताइए, तो what is shear center, sir? It is the point wherein when the load is applied, there is only bending, there is no twisting. And in the next class, I'll take up some more models like L section, T sections, and how to calculate forces. I will be telling you all these things. Hope you have understood this. Is it clear?
नो वर्ड सर, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज आप कमेंट्स लीव करना, यहां पे नहीं, लाइव कमेंट्स नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज लीव कमेंट्स सो दैट I can help you much more. I can help you much more. And you know, we are enjoying a lot in engineering mechanics. Please बताइए, अभी कुछ पूछना है सर? मजा आ गया सर, लेकिन पेन हुआ. Is it clear? Now I'll tell you magnitude. You have understood the flow. मतलब क्यों आ रहा है? Because of this unbalanced, the shear is developed. Is it okay? Thank you, Yesh. Yesh, thank you. Model Zindabad. Thank you, thank you. So I am closing the class. चलो आज के लिए बस इतना. Thank you. So we'll meet again. क्या बोलता है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी? और मैकेनिक्स पढ़ो, ठीक है. चलो फिर आज के लिए बस इतना. बाय बाय, थैंक यू. बट प्लीज लीव योर कमेंट्स. ओके, चलो क्लास एंड करेंगे अब. आई एम एंडिंग द क्लास. कैसे एंड करेंगे? एंड क्लास. यूट्यूब पे आएंगे.